Hi everyone, good evening. This is Shefali Singla and in this session we will be discussing about heap tree construction. आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि heap tree किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, that is inserting the elements in a heap tree. Definitely heap tree important concept है. आपको दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हीप ट्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आ सकते हैं और अगर थोड़ा सा अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, वी नो दैट वन ऑफ द सॉर्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिलीटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द हीप ट्री, दैट इज नोन एज हीप सॉर्ट. तो अच्छे से इसको समझते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, देन इजीली यू कैन डिटरमाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम एज वेल. But will restrict our discussion on creation of the heap tree. So we have two methods. So I'll be discussing both the methods in this video. So चलिए शुरू करते हैं heap tree construction. So first of all, let's understand that what is a heap tree. Heap tree is nothing but this is an almost complete binary tree with the heap property. तो कुछ कंफ्यूजिंग डेफिनेशन हो गया, कोई चक्कर नहीं है. तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं, जब भी हम हीप ट्री की बात करते हैं दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. चाहे आपको इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, हमें यही दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड वन इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी. नाउ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेज दैट कि जो हीप ट्री का स्ट्रक्चर होगा वो होता है हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसका क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री मींस अ नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. कंप्लीट होता है जब हर लेवल पे जितनी भी मैक्सिमम नोड्स आ सकती हैं, दैट इज फुल. सो दैट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैक्सिमम 2 नोड्स कैन बी अवेलेबल एट द हाइट 1. नेक्स्ट हाइट पे आपके पास 4 नोड्स आ सकती हैं. सो ऑल द नोड्स आर अवेलेबल. सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ऑलमोस्ट का मतलब ये है कि लास्ट लेवल को छोड़कर बाकी सारे के सारे लेवल्स फुल हैं. लास्ट लेवल को छोड़कर बाकी सारे लेवल्स फुल है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ट्री बनाना है जिसमें मेरे पास 4 नोड्स हैं. अब 4 नोड्स के साथ हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया फिक्स्ड है कि हमें 7 नोड्स ही चाहिए. व्हाट इफ आई हैव 4 नोड्स और 5 नोड्स? सो इन दैट केस वी गेट द ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. सो हियर दिस लेवल इज फुल. अब जो फोर्थ नोड है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी अनडाउटेडली. अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. कहां पे जाएगी? सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, विल स्टार्ट फिलिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल पोजीशन. सो 4 positions are available. Fourth element will be taking place at the left most available position. This is the structure of almost complete binary tree. इसको हम बोलेंगे almost complete binary tree. If we have 4 नोड्स, और अगर मैं फोर्थ नोड को ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे तो जानेंगे, अगर मैं कहीं यहाँ पे ऐड करती हूँ और इफ आई एम एडिंग दैट नोड हियर और हियर, देन विल से दैट इट्स नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. आई होप ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब जो भी हीप ट्री है, पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा दैट इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. अगर किसी भी ट्री के लिए आपसे पूछा गया है वेदर द गिवन ट्री इज हीप ट्री और नॉट, और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप आगे ऑर्डर प्रॉपर्टी चेक करेंगे ही नहीं. ओके अब इसका आइडिया क्या है? जब भी हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ ट्री. One is the array representation and other one is the tree representation. Array representation में अगर हम represent करते हैं, तो somewhere in the middle we get a space. हमारे पास एक gap आता है which is not allowed. So that is why in almost complete binary tree we are saying that whenever we are going to add the element on the next available next level, and there are multiple nodes, there are multiple positions available where you can add a node, तो हम उसमें लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जाते हैं. सेम कॉन्सेप्ट हम डिलीशन में फॉलो करेंगे. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. आई होप दैट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इज क्लियर टू एवरीवन.
Structure property is clear. Next is the order property. किसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को, पहली चीज है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, किसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम हीप ट्री तब बोलते हैं व्हेन इट सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी। हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज हीप प्रॉपर्टी। वन इज नोन एज मैक्स हीप प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज नोन एज मिन हीप प्रॉपर्टी। मैक्स हीप property and other one is known as min heap property. If any almost complete binary tree satisfies the max heap property, अगर कोई भी almost complete binary tree max heap property को satisfy करते हैं तो उस tree को हम बोलते हैं max heap tree, and if it satisfies the min heap property then we'll call that tree as the min heap tree. So I can call this as max heap tree अगर मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और अगर मिन हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है then we'll call this as min heap tree. Combination of both is not allowed. I'll take the example so that easily you can identify whether the tree is a min heap tree or max heap tree or none of them. So first of all, what is this max heap property? Max heap property ये बोलता है कि जब भी आप कोई भी सब ट्री लेते हो उसमें root will be greater than all of its children. यानी कि जो root element होगा, parent element होगा, that will be greater than its children. For example, this is the parent and this is child node 1. ये child node सब tree भी हो सकता है और single node भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ भी ना हो. So here parent is greater than both of its children, or let me write this as is greater than both of its children. And if we talk about the min heap property, here min heap property says that the parent will be smaller than both of its children, यानी कि जो parent की value होगी that will be the minimum one. So parent is smaller than both of its children. सिंपल टर्म्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पेरेंट होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट or the smallest element will be at the root. We'll go through the examples and we'll understand this in more detail. So example is if I'm taking the element like 10, to the left I'm having the element 8 and to the right we have the element 9. तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 10 is the parent node, 10 is greater than both of its children, that means it satisfies the max heap property. If I take the example for the min heap tree, for example we have 1, 2, 3, so parent is smaller than both of its children, so among all the elements available smallest element is at the root. So min heap tree mein root is always representing the smallest element, and in case of max heap tree root is representing the greatest element or the largest element. I hope itna concept clear hua hoga. This is the largest element. Make sense? Now let us consider the example to identify whether the given tree is a heap tree or not. So you have to tell me that whether it's a heap tree or not. चेक करने का तरीका क्या है? You have to check for both the properties. पहले आप चेक करेंगे structure property and then the order property. I hope that this is clear to everyone. What is structure property and what is order property? Now, here let's say the tree is having the root node as 10, 8, 9, 14, 13 and 12, or let me take this as 11, something like this. So is this tree a heap tree? Check करने का तरीका, first of all we'll go for the structure property. Is it satisfying the structure of the almost complete binary tree? Structure is, here we have the node, this level is full, next level is also full, next level पे हमारे पास
सारी नोड्स अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट द कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट जितनी भी नोड्स अवेलेबल हैं दीज आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, सो डेफिनेटली यस, structure property is satisfied for this tree. Structure property is satisfied. Now let's talk about the order property. Order property में हम ये बोल रहे हैं either it should satisfy the max heap property or the min heap property, but the combination of both is not allowed. If we check here, 10 is greater than both of its children. So this means that this is the maximum node. 8 is greater than both of its children. 8 is minimum. It's smaller than both of its children, so it satisfies the property of the min heap tree. This also satisfies the property of min heap tree. That means ना तो ये completely min heap tree है, min heap property satisfy कर रहा है, और ना ही max heap property satisfy कर रहे. So we can say that order property does not satisfy here. So this tree is not. Conclusion is दोनों में से एक भी property गलत हुई तो we'll say that this is not a heap tree. The given tree is not a heap tree. Okay. Next, let's take one more example. 1, 5. Let's say here I'm taking the element 3, 8, 6, 4, and 7. What about this tree? Is this a heap tree? If it's a heap tree, can you tell me that whether it's a min heap tree or max heap tree? क्या आप daily classes लेंगे? I'll discuss, Chaudhary, I'll be discussing the schedule at the end of the class. इस क्लास के एंड पे हम स्केड्यूल डिस्कस करेंगे. सो वी हैव द सेशंस ऑन 5 days, जिनमें से 3 मास्टर क्लासेस हैं, 2 मास्टर क्लासेस हैं, 3 यूट्यूब सेशंस हैं. कौन से दिन क्या है, क्या लिंक है दोनों के बीच में, आई डिस्कस दैट टुवर्ड्स द एंड. लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. So this tree, is it a heap tree? अगर heap tree है तो you have to identify whether the given tree is a max heap tree or min heap tree. So if you check here, root is 1 is smaller than both of its children. That means this is the minimum node. 5 is smaller than both of its children. ये भी min heap property को satisfy कर रहे. 3 is smaller than both of its children. This also satisfies the min heap property. Anyhow, this is a complete binary tree, तो structure property fulfill हो रही है. 8 is not having any child. 6 is not having any child. So this means that जितनी भी internal nodes हैं, all are satisfying the property of the min heap property. So we can say that since here the structure property is satisfied, structure property, हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री चाहिए था, बिल्कुल है. वी नीड to have the min heap property or max heap property. It satisfies the min heap property. For every node, you have to check for the order property. Since both the properties are satisfied, so we can say that the given tree is a heap tree. Particularly कौन सी टाइप का heap tree है? यहाँ पे min heap property satisfy हो रही है, so the given tree is min heap tree. मैम ये min heap हो सकता है, लेकिन BST की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे. सी जो heap tree है, it has nothing to do with the binary search tree. Binary search tree is one of the search tree जिसमें हम ये बोलते हैं कि smaller elements are on the left side and the greater elements are on the right side. Heap tree में हम सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि parent या तो दोनों children से greater होगा या दोनों से smaller होगा. There is no relationship between the left subtree and the right subtree. Purposefully, I wanted you to notice this point. Purposefully, यहाँ पे मैंने smaller elements को left side पे रखा है, greater element is on the right hand side. अगर आप binary search tree property देखते हो तो उसमें तो हम ये बोलते हैं. Now let's quickly go through the binary search tree. Binary search tree में we say that the small root, जो root है, that is smaller than the elements of the left sub, root is greater than the elements of the left subtree and smaller than the elements of right subtree.
तो इस केस में तो कभी भी आपकी हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। इस जो हीप प्रॉपर्टी है उसमें तो हम ये बोल रहे हैं कि रूट शुड ईदर बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन और स्मॉलर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। चौधरी, आपका डाउट क्लियर हुआ? So if you are considering, if you go with this order property, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा कभी भी आपके पास सर्च प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ये बोला है कि दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर होगा। बट सर्च ट्री क्या बोलता है कि राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन द रूट एंड लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर देन द रूट। सो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हो। हीप ट्री का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि either the smallest element or the greatest element should be on the root। क्या बाइनरी सर्च ट्री में कभी भी आपके पास स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट रूट पे आते हैं? नहीं आते, until and unless it's a skewed tree। ओके, ना ही बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसी कोई रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज वी नो दैट इन द बाइनरी सर्च ट्री द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, जब आपके पास क्यू ट्री बनता है। बट हीप ट्री में कभी भी आपके पास क्यू ट्री नहीं बनता। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास ट्री बैलेंस्ड होना चाहिए। ऑलराइट, let me take one more example. Just identify whether the tree is a heap tree or not. 10, 8, 9, 6, 5 and 4. Is this tree a heap tree? अगर ट्री स्क्यू ट्री है तो हम उसको एरे की तरह बिल्कुल कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसमें गैप्स आते हैं। बिकॉज एरे रिप्रेजेंटेशन में वी हैव टू डिटरमाइन कि लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन कौन सी और राइट चाइल्ड की पोजीशन कौन सी है। तो सिंपली आप अगर एल्गोरिथम एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हो एज द एरे, सो दैट इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। We had discussed the tree representation, array representation and linked list representation when we discussed the concept of the trees. तो definitely skew tree आपके पास array की तरह नहीं दिखेगा। Okay? If the concept is clear, before going for the creation of the heap tree, quickly let me know जो मैंने third tree बनाया है whether this is a heap tree or not, और अगर है तो कौन सा है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। Why I am focusing on these properties a lot, reason is जब भी हम insertion या deletion कोई भी operation perform करते हैं heap tree के ऊपर, we have to follow these properties. Can you tell me that whether the third tree is a heap tree or not? First of all, you need to check for the structure property in heap tree है. Okay. Why is it min heap tree? First of all, Matsy, the order property. Can you directly go to the order property? First of all, we need to check for the structure property. According to the structure property, definitely if we have 6 nodes, we'll be having 3 levels. So in this case, there is a gap here. Left child fill nahi hua, left child ke aane se pehle hi right child aa gaya. Is that possible? This is not possible. This tree does not satisfy the structure property. अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली विल से दैट दिस इज नॉट अ हीप ट्री, not a heap tree. Again, I'm repeating this point. Whenever we are looking for a heap tree, किसी भी ट्री को, किसी भी बाइनरी ट्री को, किसी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम हीप ट्री तब बोलते हैं when that binary tree is almost complete binary tree and it satisfies the order property. तो यहाँ पे पहली ही प्रॉपर्टी गलत होगी, it is not almost complete binary tree. This is not almost complete binary tree. तो यहीं पे हम बोल देंगे कि this is not a heap tree. I hope that the definition of heap tree is clear. तो ये जो मैंने examples लिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ heap tree। मैम प्लीज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है डिस्कस्ड
कीजिए. I guess you have joined the session late. So structure property says that the tree should have the almost complete binary tree. Almost complete binary tree simply says that all the levels of the tree should be full except the last level. सिर्फ last level full नहीं होगा. मतलब एक्सेप्शन आ सकती है लास्ट लेवल पे अब जब किसी एलिमेंट को रखना है तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो. नंबर ऑफ लेवल्स तो सेम ही रहेंगे, बट इट सेज दैट if multiple options are available, element will be added to the leftmost available position. Like here we took the example, here 4 positions were available, तो आप leftmost available slot पे add करोगे. Reason is when you are storing this in the array, this is 3 4, जब मैं इसको array में store करूंगी, I'll not be getting any gap. जब हमने array representation किया था, I told you if any child is missing, in that case we'll be getting the gaps. So in this case, बीच में कहीं पे भी gap नहीं आ रही. If I'll be adding a node somewhere here, so for the node 2, left child is missing. जब इसको हम array के साथ represent करेंगे, I'll be getting the array something like, मैं पूरा array नहीं बना रही हूँ, 1 2 3. Next position, 1 का left child, 1 का right child, 2 का left child, then 2 का left child is not available, right child is, let's say this is 4. So there is a gap, this gap is not allowed in heap tree. तो इसलिए जब भी आप next level पे element add करते हो, it will always be added on the leftmost available position so that जब आप array बनाओगे उसमें कोई भी gap नहीं आएगा. Okay, this is almost complete binary tree. We have understood that what is a tree. Now let's go for the construction of the max heap tree. Max heap tree construct कैसे करते हैं? There are two methods to construct a max heap tree. One method is uh, one by one, add the elements one by one. Or you can say that adding the elements one after the another. One after another. That means हर एक एलिमेंट को आप ऐड करेंगे एंड देन यू विल एडजस्ट द ट्री. क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, जितना बड़ा एग्जांपल मैंने लिया ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जांपल नहीं आएगा. सो यू विल बी गिवन विद सम सेट ऑफ एलिमेंट्स और आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मेनी स्वैप्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गेट द हीप ट्री. और नंबर ऑफ स्वैप्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे एंड दे विल आस्क दैट व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैक्स हीप ट्री. So resultant tree पूछ सकते हैं, number of swaps पूछ सकते हैं. So first of all, whenever we are constructing a tree, whatever is the first element, that is always a root node. Why is it a root node? Because we know that whenever tree starts growing, सबसे पहले roots आती है, तो definitely जो भी first element आ रहा है, that is the root element. So 70 is the root element. Now we are supposed to construct the max heap property. Element add करना है, delete करना है, need to follow two properties, structure and the order property. So according to this one, 60, next element is 60. According to structure property, कहाँ पे जाएगा 60? Obviously root पे एक ही element होता है, so we have taken one element, 60 will be going to the next level. Since we want to satisfy the structure property, that is almost complete binary tree, so the next element will be added to the दो positions मिल रही है to the left of 70. राइट पे ऐड नहीं कर सकते, अगर आप राइट पे ऐड करते हो तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. 60 is added on the left. Correct? Now check for, after adding each element you have to check for the heap property. क्या ये tree max heap tree है? Parent is greater than its children, it's a max heap tree. Then go to the next element, so that is 50. इसके next element से I'll be adding the elements over here only. So 60, next element is 50. 50 कहाँ पे जाएगा? One slot is available. Next level पे नहीं जा सकते क्योंकि जब तक previous level full नहीं हो जाता, we cannot go to the next level. So 50 will be added somewhere here. Now after adding 50, check for the heap property. Is this a heap tree? Structure property के according हमने element add किया है. Max heap देख लो, parent is greater than both of its children, so it's a max heap tree. That means
50 को ऐड करते हुए भी हमें कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 40। 40 विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अब जो सेकेंड लेवल है वो फुल हो चुका है, सो वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और इन चारों में वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड 40. Now check for the heap tree. One after another means after adding each element, you have to check for the heap property. So I have added the element 40, check for the heap property. 70 is greater than both of its children, 60 is greater than its child, so no problem. Next element is 90. According to structure property, 90 will be a right child of 60. Now check for the order property. 90 ऐड हुआ है तो इसका मतलब अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो 90 क्रिएट करेगा। हियर 60 इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, नो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करेंगे, वी नीड टू स्वैप द एलिमेंट्स। स्वैप मींस एलिमेंट्स के पोजीशंस आपस में चेंज हो गए, 90 and 60. Now 90 is greater than both of its children. It satisfies the heap property. Again, 90 is smaller than its 90 is greater than its parent. ये हो नहीं सकता max heap tree में. Parent should be maximum. So 90 or 70 में से 90 is greatest. So it will be going to the parent level. So here 70 and 90 are swapped. So in order to insert 90, we are having two swaps. So two swaps are taking place. So after swapping the elements, we are getting the tree as 90, 70, 50, 40 and 60. So now is it a max heap tree? Yes, 90 is greater than both of its children, 70 is greater than both of its children. So definitely yes, this is a max heap tree. So this is known as one after another और adding the elements one after another, क्योंकि हर एक element को insert करने के बाद हम property check कर रहे हैं. So here take the next element, that is 30. Now we can insert the 30. According to structure property, 30 will be going to the left of 50. 30 is smaller than its parent, so it is allowed. जब subtree में problem नहीं आई तो overall tree will be stable. Next element is 20. That will be going to the next level. 20 is smaller than its parent, so no issues. Next element is 110. It is 10 only. So 10 is smaller than its parent. तो मैक्स सीड में हमने यही बोला कि चाइल्ड इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट, सो 10 is smaller than its parent, no issues. Next one is 150. Need to add 150. According to structure property, it will go to the right side of 40. Now 150 is greater than its parent, so we need to do the swapping. 40 will be swapped with 150. 150 will be swapped with its parent, 70, and 90 will be swapped with 150. So maximum कितने swaps हो रहे हैं? In the worst case, you can see that कि leaf level से शुरू है and we are going to the root level. So it depends on the number of levels of a tree. In this case, we have 3 levels. So 3 swaps are taking place. First swap is taking place here. Second swap took place here. Third swap is taking place here. So in order to insert the element 150 in the tree, there are 3 swaps taking place. Okay. Next one is 5. Let me draw the tree here. अभी तक का जो मैक्सिमम एलिमेंट था, जब आपने 90 को ऐड किया था, 90 was the maximum element, so 90 was at the root. जब 150 आया, among all these elements 150 is the greatest element, so greatest element is at the root. इसीलिए हमने बोला था कि मैक्स हीप ट्री में greatest element is always at the root and smallest element is always at the leaf level. Okay, तो ये जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बेसिस पे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड विल सी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ heap tree in tomorrow's master class. Here we have the element 90, we have the element 50, 70, 60, 30, 20, 10 and 40. Okay,
So 50 is also added. Now consider the next element. It is 5. 5 will be, according to structure property, 5 will be going to the left of 60. 5 is smaller than its parent, no issues. 7 will be added on the right side of 60. कोई problem नहीं है. 8 is added on the left side of 30. According to structure, 8 is smaller than its parent, so that's fine. Next element is 200. So according to structure property, 200 will be added on the right side of 30. Now 200 is greater than its parent, so we need to do the swapping. कितने swaps होंगे worst case में? Since this is the greatest element and available at the leaf level, but ये होना कहाँ पे चाहिए था? At the root level. तो leaf level से root level पे जाने के लिए there are 3 levels, so that means 3 swaps will be taking place. So first of all, 200 will be swapped with 30. Swap number 1. Swap number 2, 200 will be swapped with 50. Swap number 2. Then swap number 3, 200 will be swapped with 150. So 3 swaps are taking place. अगर आपसे resultant tree पूछे है तो obviously आपको options में tree given होगा. 200 is the greatest element. So in the max heap tree, this is available at the root level 90. To the right, we have the element 150. To the left, we have the element 70, 60, 50, 20. Here we have the elements 10, 40. आप किसी भी node के लिए check करेंगे, you will be getting here the max heap property 5, 7, 8 and 30. Tree is a max heap tree. Structure property satisfy कर रहे 200 is greater than both of its children, 90 is greater than both of its children, 150 is greater than both of its children. So this is the resultant tree. Is the construction of tree with one after another method clear? This is the resultant tree. Other question that they can ask is on the basis of the number of swaps. In order to insert the element 90, 2 swaps took place. 150 के लिए 3 swaps and 200 के लिए फिर से 3 swaps हुए. So total number of swaps are 8 swaps. 8 swaps are required to construct the max heap tree from the given set of elements. I hope that this is clear to everyone. Let's consider, okay, we have already constructed this. So in heap tree construction, simply we are adding the new element at the correct position. At the correct position means according to the structure property. By satisfying the structure property, we are adding the element at its correct position. After that, introduce the new element to the tree by satisfying the almost complete binary tree, that is the structure property. Time taking question है, time taking question बिल्कुल नहीं है, maximum 1 मिनट का टाइम लगता है. The thing is, क्योंकि यहाँ पे मुझे explain करना था, एक ही ट्री को मैंने काफी बार बनाया है ताकि आपको steps clearly समझ में आए. I'll be taking one more example. You'll get that concept कि इतना टाइम नहीं लगता है. Then swap the values. सबसे पहले structure property satisfy करवाई, उसके बाद हम values को swap करवा रहे to satisfy the condition of the max heap tree. So this is order property. जिन लोगों को लग रहा है कि time consuming है बच्चे, जब हम concept को understand कर रहे हैं, जब नया concept सीख रहे हैं, अगर मैं उसी time पे speed से पढ़ाऊंगी, speedily question को करूंगी, then you guys will be like, मैम अपनी speed में भागती हैं, कुछ समझ में नहीं आया. तो पहला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसमें हमें फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है रादर देन द स्पीड. जैसे जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेटली विल फोकस ऑन द स्पीड एज वेल. ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकते कि पहले स्पीड पे ध्यान दे लो और उसके बाद कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो. सो इट्स ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड देन द स्पीड. Here I want to construct a max heap tree from the given elements. अब दो methods के साथ इस question को करेंगे. One is one after the another. Now you very well know that how one after another method works. So let's quickly add the elements. 10 कोई problem create नहीं करेगा. 20 is greater than its parent, so swapping needs to take place. So on insertion of 20, first swap is taking place. Here we are getting 10. So एक swap हुआ. Then is 30. Next element is 30. 30 will be added to the right. 30 is greater than its parent, so swapping will take place. Here we'll get 30 and here we'll get 20.
So one swap is taking place for 30. So as of now, we have the tree 30, 10 and 20 मैक्स हीप ट्री दिख रहे हैं. मैक्सिमम अभी तक 3 एलिमेंट्स आए और तीनों में से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है दैट इज एट द रूट लेवल. नेक्स्ट एलिमेंट इज 40. लेट्स ऐड द एलिमेंट 40. 40 is greater than its parent, so need to do the swapping. First swap, 10 and 40 will be swapped. 10, then 40 and 30 will be swapped. That means कितने swap हुए? 2 swaps took place क्योंकि यहाँ पे आपके पास number of levels ही 2 बन रहे थे. So 2 swaps are taking place. Insert the next element according to the structure property. Next element will be added to the right of 30, that is 50. 50 is greater than its parent, so need to swap the elements. Here we'll get 50 and here we get 30. Next, 50 and 40 will be swapped. Here we are getting 50 and 40. इसको मैं थोड़ा सा speedily कर रही हूँ because we have already understood how we are swapping the elements. So in order to insert the element 50, 2 swaps are taking place. So after this, we are getting the tree as 50, 40, 20, 10 and 30. अभी तक का जो maximum element है that is available at the root, and the second maximum is the child of the root. Left child होगा या right child होगा, we cannot determine that, but surely the second largest, if the largest element is at the root, second largest element is at the is the child of the root element. ये जो मैंने property discuss किया, on the basis of this you can get the statement in true and false. All right, next element. Next element is 60. According to structure property, it will be a left child of 20. Now swap the elements because 60 is greater. So here we'll be getting 60 and 20. 60 will be swapped with 50. So 2 swaps are taking place. For 70 also, it is going to take 2 swaps. According to structure property, first of all, 70 will be added here. Now 70 is greater than its parent. So first swap will be taking place. 70 will be swapped with 50. Now 70 will be swapped with 60. So that means on the root, we are getting the element 70. To the left, we have the element 40, 60, 10, 30, 20, and 50. Largest element, greatest element is at the root. Second greatest element is 60. That is the child of root. Okay. So this is the resultant tree. Resultant max heap tree. If we talk about the number of swaps in order to construct the max heap tree from the given set of elements by using the method one after another, this is taking 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. That is nothing but 8 plus 2 is 10. 10 swaps are taking place. Clear? So there is one more method. This is one after another. We have added the elements one after another. But definitely this is returning more number of swaps. ये ज़्यादा number of swaps लेता है. Reason is कि यहाँ पे आप एक element को बहुत बार swap कर रहे हो. Correct? So there is another method, that is build heap method. So I'm taking the same set of elements ताकि हम comparison कर पाए कि number of swaps कैसे कम हुए. So using build heap method. This is going to provide you the optimal solution. So first of all, build heap method में हम क्या करते हैं, whatever elements are given to you, सारे के सारे elements को हम level order traversal के according store करवा देंगे. That is, first of all we are getting 10, तो ये root होगा. Structure property के according next element कहाँ पे जाएगा, left side पे. Next element right side पे. Level full हो गया, अब next level पे जाना है. Next level पे next element will be the leftmost child, then right side, then left and then right. So बिना कुछ देखे मैंने tree में elements को insert करवा दिया. This is step 1 of the build heap method. Now we need to heapify this tree. आपके पास tree बन गया. Heapify का मतलब है कि हमें heap property satisfy करवानी है. कहाँ से शुरू करेंगे? From the first internal node.
फर्स्ट इंटरनल नोड क्या होगी? अगर आप यहाँ से देखना शुरू करते हो, 70 इज द इंटरनल नोड, नो। 60 इज द इंटरनल नोड, नो। 40, नो। यानी कि अब वापस जब ये जाएगा, और लेट्स से द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लाइक, अगर आप एरे में देखते हो, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. आप check कर रहे हो for the first internal node. So I'll start from here. 70 is the internal node. No, this is a leaf node. 60 is the leaf node. 50 is the leaf node. 40 is the leaf node. So I got the first internal node. 30 is the internal node. Internal node means a node which is having some child. So 30 is the internal node. So I'll start heapifying the tree from the first internal node. Is this point clear? तो हीपीफाई कैसे कहते हैं? वी नीड टू चेक फॉर द हीप प्रॉपर्टी. किसकी हीप प्रॉपर्टी देखेंगे? क्योंकि हमें मैक्स हीप ट्री बनाना है, सो आई विल चेक फॉर द मैक्स हीप प्रॉपर्टी. मैक्स हीप प्रॉपर्टी ये बोलता है कि पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन. यहाँ पे क्या हो रहा है? विल स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम 30. अगर हम इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, whenever you are constructing a almost complete binary tree, so almost half of the nodes are the internal nodes. अगर total n nodes हैं तो approximately n by 2 will be the number of internal nodes. Now 30 is 30 की जगह पे क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आउट ऑफ 30, 60 एंड 70. मैम इंटरनल नोड थोड़ा वापस बोलिए. इंटरनल नोड होती है व्हेन एनी नोड इज हैविंग सम चाइल्ड. अगर किसी भी नोड का जीरो चाइल्ड है, अ नोड हैविंग जीरो चाइल्ड, दैट इज नोन एज लीफ नोड. और अगर कोई भी नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड अवेलेबल है, चाहे एक चाइल्ड है या दो चिल्ड्रन है, देन इट इज नोन एज द इंटरनल नोड. ओके. So almost half of the nodes are the internal node and half of the nodes are the leaf nodes in a binary tree. ये सारी की सारी properties trees में covered हैं. I'm not going into the details of those properties. So we are looking for the first internal node. Leaf node, leaf node, leaf node, leaf node. मेरे पास पहली internal node मिल गई. पहली internal node कौन सी है? 30. Because 70 का कोई चाइल्ड नहीं है, 60 का कोई चाइल्ड नहीं है, 50 का कोई चाइल्ड नहीं है, 40 का कोई चाइल्ड नहीं है. That means all these nodes are the leaf nodes. I want the first internal node, so 30 is the first internal node. Now, max heap property says that the maximum element should be at the root. तो अगर मेरे पास ट्री है 30, 60 and 70, इनमें से maximum element कौन सा है? That is 70. That means 70 should be available at the root level. 70 should be available at the root level. So here we'll get 70 and 30. Now this looks like the max heap tree. So 70 will be swapped with 30. First internal node adjust हो गई. Then we'll go to the next internal node. आपको ये प्रॉपर्टी सारी इंटरनल नोड्स के लिए चेक करनी है. हमने यही बोला था स्टार्टिंग में कि अगर कोई भी ट्री हीप ट्री है, then all the internal nodes should satisfy the heap property. अभी तक हमने सिर्फ एक ही नोड के लिए चेक किया. Now we'll go to the next one. 20. 20 is greater than both of its children? No. So we need to do the swapping. I need to keep track of the number of swaps as well. एक swapping हो चुकी. Next, 20 is greater than both of its children? No, so 20 will be swapped with 50. Now this looks like a heap tree, so one more swapping has taken place. ये समझ में आया? So second internal node भी adjust होगी. So this way you have to adjust all the internal nodes. We are going to the node 10. Now check 10 is greater than both of its children. 10 is smaller than both of its children. Maximum किससे swap होगा? 10 50 से भी छोटा है, 70 से भी. 50 से swap नहीं कर सकते because root पे हमें maximum element चाहिए. तो इन तीनों में से maximum element कौन है? 10, 50 and 70. That is 70. So it will be swapped with 70 and 10. One swap. After that 10. अब यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हो सकता है इसने अपने सब ट्री को डिस्टर्ब किया हो. Now here it is smaller than both of its children, so further we have to adjust the subtree as well, 10 and 60.
So this means that 30 के लिए एक swap आया था, 20 के लिए एक swap आया था, and 10 के लिए 2 swaps are taking place, so plus 2. So in order to get the heap tree from the given set of elements, it requires 4 swaps. It is taking 4 swaps. And the resultant tree is root element is 70, 50, 60, 40, 20, 10, and 30. This is the resultant max heap tree. Max heap tree. Make sense? अब अगर हम दोनों methods को compare करते हैं, I had taken the elements 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. मैंने same set of elements लिए हैं. Construct करने max heap tree using different methods. I have discussed 2 methods, one after another and build heap method. अगर one after another method use करते हैं, in that case it was taking 10 swaps. इस case में कितने swaps ले रहे हैं? It is taking 4 swaps. So which method is better? Obviously it's the build heap method. अगर आप tree construct करते हो using build heap method, that is taking order of n time complexity, whereas using one after another, this is going to take order of n log n. Because एक element को insert करने के लिए maximum swaps कितने हो सकते हैं? log n. log n swaps हो सकते हैं. अगर n elements add करने हैं, then it will be taking n log n. But in case of build heap method, हमने क्या किया? सारे elements को add करवा दिया. उसके बाद आपके पास internal nodes कितनी होंगी? Almost half of the total number of nodes. तो यानी कि आपको कितनी nodes को heapify करने? n by 2. n by 2 is nothing but its order of n. So this is the difference between the build heap method and the one after another. So if nothing is given in the question, by default will follow the build heap method because time complexity is less. Another reason is अगर आपको ये बोला गया what are the minimum number of swaps, आपको method mention नहीं किया होगा. minimum number of swaps अगर पूछे तो कौन सा method minimum number of swaps दे रहा है? It is the build heap method. Then we'll go for build heap method. तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखकर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है. यूजुअली इन 95% केसेस अगर कुछ भी नहीं दिया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं या तो बिल्ड हीप मेथड की प्रॉपर्टी गिवन होगी या फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स गिवन होगा. सो इन दैट केस वी आर यूजिंग द बिल्ड हीप मेथड. If specifically अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है that what will be the number of swaps using one after another method, or we are constructing a max heap tree or the min heap tree using one after another method, in that case you will be following that method. मैम इस मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? Discuss the complexity for both. So using one after another it is n log n, and using the build heap method it is order of n. Okay. So this is all about the construction of the tree. So this is the question for your practice. I hope that the concept is clear to everyone. So this is all about this session. In the next session, I'll be discussing the concept of algorithm analysis. So next session में हम कैसे करते हैं? This is the important type. Question directly आता है, आपको कुछ code snippet given होगा and return the complexity. मैम ऐसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं. इनफैक्ट गेट में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं. सो किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? यूजीसी नेट और गेट में ऑलमोस्ट आज की डेट में सेम लेवल चल रहा है. सो मेनी गेट क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द यूजीसी नेट. तो कल हमारा जो सेशन है दैट इज अ मास्टर क्लास, एंड इन द मास्टर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. So currently the schedule that I'm following is, we have two types of free sessions. One is on the YouTube and other one is on the master class. YouTube में मैं important concepts cover कर रही हूँ और master class में मैं questions करवा रही हूँ. सिर्फ और सिर्फ हम लोग questions करेंगे master class में.
So in the YouTube session, we are covering important concepts. Obviously, 100% कॉन्सेप्ट्स डिटेल में नहीं है. डिटेल में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाए हुए हैं इन द सुपर कोचिंग. तो सुपर कोचिंग बैच की अगर आपको डिटेल्स चाहिए देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज देयर, जस्ट गो थ्रू इट. अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज या कंसर्न्स हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. फॉलो इट and you can get in touch with me in case you have any doubts or difficulties. So important concepts, masterclass में we are covering the important set of questions. Topics को हम relate करके चल रहे हैं. For example, Wednesday whatever concept we have discussed in the YouTube session, उसके basis पे हम Thursday को questions करेंगे. Then Friday ko will be covering next concept. On the basis of that, we'll be covering the questions in Saturday's class. Then on Sunday, we will be having the YouTube session. इसके questions हम Wednesday वाले session के साथ merge कर देंगे. So that means ये जो free classes हैं, YouTube sessions और master class, हमारी ये जो classes हैं ये हफ्ते में 5 दिन है. Wednesday to Sunday, Monday and Tuesday is off. So the timing is same, बस सिर्फ platform change होगा. Alternate days पे YouTube और master classes चल रही हैं. Apart from that, in the super coaching, I'm talking about the paper 2. जितने भी सब्जेक्ट्स गेट के हैं वो सारे के सारे यूजीसी नेट में तो है ही हैं, प्लस सम एडिशनल सब्जेक्ट्स आर देयर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सो ऑन. So all those subjects will be covered in detail in the live classes. I'm talking about paper 2, that is computer science. जिन लोगों का paper 2 computer science है या फिर गेट में आप computer science की preparation कर रहे हो, so you can refer these classes. Morning and evening, every day we are having 2 sessions. Duration of each session is 2 hours. So morning session timing is 7:30 a.m. to 9:30 a.m. and for the evening it's 8 p.m. to 10 p.m. Weekends off nahi rakhein because majority of you are free on weekends. तो weekends पे sessions आप लाइव ज्वाइन करके उसमें डाउट्स पूछ सकते हो, सो वी कैन स्पेंड मोर टाइम. सो दैट इज व्हाई फॉर मॉर्निंग थर्सडे इज ऑफ and for evenings Monday and Tuesday is off. Monday and Tuesday off. So that is why ये जो free sessions है ये भी evening में, so Monday and Tuesday is off. गेट CSC 2025 की preparation कर रहे हो, that's good. So obviously all your queries will be handled here. I hope that कि आज वाला सेशन यूजफुल रहा होगा, आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हुए होंगे. So this is the benefit of joining the live sessions. You can ask your doubts and accordingly we can have more number of questions and the examples. So this is all about this session. Thank you so much guys. I'll see you tomorrow in the master class. Go through the concepts of heap tree and we'll be solving the questions, different set of questions which have been asked either in UGC NET or GATE exam in tomorrow's masterclass. Till then, take care. Bye bye. God bless you all. Good night.